Okay, it's a trash day. I need to put up my trash. After that, I'm going to make some hamburger. देखिए यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी, मेरा पूरा व्हील बैरो भरा हुआ है पानी से. ये 2 पाउंड ग्राउंड बीफ है जिसका हम हैमबर्गर बनाएंगे. वजह से हैमबर्गर ये टर्म हैमबर्गर है, लेकिन इसमें हैम नहीं होता है, ये हलाल बर्गर है. ये जस्ट बीफ का गोश्त है, ये 2 पाउंड. तो इसमें जो हम मसाले डालेंगे वेरी सिंपल है. इसमें आप बेसिकली अनियन पाउडर और काली मिर्च, नमक और एंड मस्टर्ड सॉस. दैट्स प्रीटी मच इट. तो देखिए इसमें 80-20 मतलब 80-20 का मतलब है कि 80% मीट है, 20% इसमें फैट है. जब भी बर्गर बनाया तो मेक श्योर दैट यू गेट at least 20% fat. 1 tablespoon of salt. अगर आपको सॉल्ट और डालना है तो अपने हिसाब से और डाल दीजिए आप. बट नॉर्मली we like to eat less salt. 1 tablespoon of black pepper. Little bit of onion powder. Okay, now you need to mix it up. Give it a very nice mix. Make sure all the seasons are mixed up pretty well. आप अपने मसाले सही से मिला लें. इसको डालने के बाद फ्लिप इट, इसको पलट के फिर उसको मिलाएं. अच्छे से मिला लें. मेक श्योर let it sit for at least half an hour. And okay, it's almost couple of half an hour. So I'm going to make a bowls, small bowls, and
So उसको करने के लिए आपको you have to portion it in proper sizes. So I made a 4 portions. उसके बाद आप you can make 2 smaller portions and all even sizes. And then you make this one, and then you make this one. So it's almost proper sizes. So proper size balls. This one. You can make it smaller if you like, but this is a pretty good size. Second. Third. Doesn't have to be exact shape. आप कोई भी शेप बनाओ, कोई भी शेप बना लें. It's pretty thin. काफी thin है ये. And I will do the rest. I'm using unsalted butter for the pan.
These are the toasted buns. You can also add tomato and lettuce. Lettuce is good. I'm not adding today, but you can always add those. These are just a homemade, so I have a lettuce and tomato, but I'm not adding. So I'm preparing this for my son. But you can always add those. Son doesn't like lettuce and tomato, so I'm gonna put it right here, and the next one I'm gonna put it right here. Go, flip it over, do that. Cheese came out. I'm going to put the cheese back in there. Please let me know how you like it. Like, share, and subscribe.